हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस वर्ल्ड। तो आज फिर से कई दिनों के बाद हम वापस आ गए हैं और आज के बाद कोशिश करूंगा कि 9 बजे तक में मैं लाइव क्लास ले लिया करूं। 8:30 से 9 बजे तक में मैं तो पढ़ लिया किया जाए। और बहुत दिन से मिस हो रहा है मेरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है मेरा। और बस जब शेड्यूल बिजी है तो बिजी है। और कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा? 51 वेरिएंस 51। क्योंकि बहुत एक प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसके बाद से बिज़ी ज़्यादा हो गया मैं, क्योंकि ऑनबोर्डिंग वगैरह करना लोगों को, उसके बाद कई सारी चीज़ें, काम तो बहुत है अभी। बस बाकी पढ़ाना भी, इस वजह से ज़्यादा बिजी हो जा रहा हूँ। 51 ये तो हमारा था क्वेश्चन। ये है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टार्ट करें। नोट्स कहाँ गई? ओके, तो हम शुरू करते हैं। साउंड वगैरह आ रही है या नहीं, अभी जब एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। साउंड नहीं आ रही क्या? है। ओके, तो ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या था? डेटा विजुअलाइजेशन 4.6 ऊपर चल रहे थे। वर्जन समरी ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। वेरिएंस 6 लास्ट हम लोगों ने क्लास की थी 9 तारीख को। बाप रे, 9 6 15 6 दिन। ओके, साउंड आ रही है। वेरिएंस हो गया, इसको भी सॉल्व कर लिया था। डिस्क्राइबिंग अ गॉसियन, ये शायद नहीं, ये कंप्लीट हो गया था शायद। हाँ, सिंपल डेटा विजुअलाइजेशन पे हम लोग आ गए थे शायद। लाइन प्लॉट, नहीं 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 नहीं, यहीं पे चलो। ये लास्ट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Describing Gaussian, a Gaussian-applied machine learning will often need to report the results of an algorithm, that is, report the estimated skills of the model. On out of sample data, this is often done by reporting the mean performance from k-fold cross-validation or some other repeated sampling procedure. In reporting model skills, you are summarizing the distribution of skill scores, and very likely the skill scores will be drawn from the Gaussian distribution. It is common to only report the mean performance of the model. This would hide the other important details of the distribution of the skill of the model.
As a minimum, I would recommend reporting the two parameters of the Gaussian distribution of model scores and the size of the sample. Ideally, it would also be a good idea to that confirm that indeed the model skill scores are Gaussian or look Gaussian enough to define. This is important because the distribution skills interpretation extension tendency development summary data sample word summarization और हमारा आता है 15/4/26 simple data visualization. Sometimes data does not make sense until you can look at a visual form, such as with charts and plots. Being able to quickly visualize your data samples for yourself and others is an important skill, both in applied statistics and in applied machine learning. In this tutorial, you will discover the 5 types of plots that you will need to know when visualization data in Python and how to use them to better understand your own data. After completing this tutorial, you will know how to chart time series data with line plots and categorical quantities with bar charts, how to summarize data distribution with algorithms and box plots, how to summarize the relationship between variables with scatter plots. Tutorial overview. This tutorial is divided into 7 parts. They are data visualization, introduction to matplotlib, line plot, bar chart, histogram plot, box and whisker plot, plus scatter plot. So data visualization is an important skill in applied statistics machine learning. Does need focus on quantitative description and estimation of data. Data visualization provides an important suite of tools for gaining a qualitative understanding. This can be helpful when exploring and getting to know a data set and can help with identifying patterns, correct data, outliers, and much more. With a little domain knowledge, data visualization can be used to express and demonstrate key relationships in plots and charts that are more visual to yourself and stakeholders than measure of association and significance. Data visualization and exploratory data analysis are whole fields themselves, and I will recommend a deeper dive into some the book mentions at the end. In this tutorial, let's look at the basic charts and plots you can use better understand your data. There are 5 key plots that you need to know. Well, for basics, they are line plot, bar chart, histogram plot, box or scatter plot, whisker plot. With the knowledge of these plots, you can quickly get a qualitative understanding of most data that you come across. For the rest of this tutorial, we will take a closer look at each plot type. Introduction to a matplotlib. There are many excellent plotting libraries in Python, and I recommend exploring from them in order to create presentable graphics for quick and dirty plots intended for your own use. I recommend using matplotlib library. It is the foundation for many other plotting libraries, and this पहले से काम किया था Paper provides the context, one in which one or more plots can be drawn before the image is shown or saved to file. The context can be accessed via functions pyplot. The context can be imported as follows: imported matplotlib context import. There is some convention to import the content name plt as we will not use this convention. Instead, we will stick to standard Python import convention. Charts and plots are made by this calling pyplot.plot.
Elements such as axes, labels, legends, and so can exist and configured on this context as separate function calls. This is so display the plot. गया क्या डेटा? क्या हुआ? ये डेटा गया. बफरिंग शुरू क्या? लो ठीक है. PNG formatted image. The save fig function can be used to save image. Save fig image का नाम दे दिया. This is the most basic crash course of the using map library. For details see the user guide and take a line plot. A line plot is generally used to represent observation collected. देखो शुरू हो गया डेटा का नौटंकी. The axis show the observation ordered by the x-axis and connected by a line. A line plot can be created by calling a plot function and passing the x-axis for the regular interval and y-axis for the observation. Create by plot useful presenting time series data as well as any sequence data where there is an ordering between observations. The example below creates a sequence of 114 point values as the x-axis and a sine wave as a function of the x-axis. As the observation on the y-axis, the result are plotted as a line plot. अच्छा भैया करते हैं सॉल्व. Day 51. Line plot example of a line plot graph. जिसमें हम क्या कर रहे हैं? From numpy import sine और from matplotlib plot pyplot. फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं consistent interval for x-axis. तो x is equals to x और asterisk 0.1. For x in range 100 और यहाँ पे function of x for y-axis y is equals to sin x. oh sorry. और हम करेंगे create line plot pyplot dot plot x comma y pyplot. So यह साइन वेव का 0 से 1 फिर -1 2 3 4 0 से 1 2 Line plot are useful for representing time series data as well as any sequence data where there is an ordering between observation.
for presenting time series as well as any sequence data where there is an ordering between observation. The example below is that ठीक है, running the example और हमें ये दे रहा है बार चार्ट की बार आ गई. A bar chart is generally used to present relative quantities for multiple categories. इसमें क्या किया था, एक मिनट. प्लॉट y पाई प्लॉट, लाइन चार्ट दे रहा है पाई प्लॉट, और यहाँ पे बार पाई प्लॉट से दिया वहाँ पे पाई प्लॉट डॉट प्लॉट कॉल करने के लिए, और इसमें कॉल करने के लिए बार चार्ट के लिए बार चार्ट. A bar chart is generally used to present relative quantities for multiple categories. This axis represent categories and are spaced evenly. The y-axis represent the quantitative for each category and is drawn as bar from the baseline to the appropriate level to on the y-axis. A bar chart can be created by calling the bar function, passing the category names. तो ये होगा call bar x comma y से. Bar chart can be useful for comparing multiple point quantities or estimations. From random import randint from matplotlib pyplot. इन लाइब्रेरीज को हम लोगों ने ओपन किया, फिर सीड रैंडम नंबर जनरेटर और सीड इसमें किया हम लोगों ने 1. उसके बाद नेम फॉर कैटेगरीज x इज इक्वल्स टू यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन, दैट्स ऑल. ये क्यों ऐसे ऐसे जैसे ऐसे, ठीक है, हो गया. और यहाँ पे ये बार चार्ट में क्वांटिटीज फॉर ईच कैटेगरी, क्वांटिटी भी देना पड़ेगा y एक्सिस पे
तो रैंड इंट में मैंने दिया 0 to 100 और रैंड इंट फिर दिया 0 to 100, तीनों के लिए अलग अलग। ओके, और फिर उसके बाद क्रिएट बार चार्ट, पाई प्लॉट बार एक्स कॉमा वाई, पाई प्लॉट सो। रेड ब्लू ग्रीन, अच्छा इसका चार्ट और इसका चार्ट में डिफरेंस ऐसा क्यों? जी जी, 0 0 0 C1। कैसे कैसे ऐसे 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 हिस्टोग्राम। Example for chart histogram plot is generally summarize the distribution of data sample. Histogram plot is generally used to summarize the distribution of data sample. The x-axis represent discrete bins or intervals for the observations. For example, observation with the values between 1 and 0, 1 and 100 may be split into 5 bins. The value 1, 2 would be allocated to the first bin, 3, 4 allocated to the second bin, and so on. And the y-axis represent the frequency or the count of the number of observation in the dataset that belongs to each bin. Essentially, a data sample is transformed into a bar chart where each category on the axis represents an interval of observations value. Histograms are density estimates, a good representation of distribution of the data. The idea is locally represent the data density by counting the number of observations in a sequence of consecutive intervals. इनको create करने के लिए create histogram histogram plot, इसके लिए होगा पाई प्लॉट डॉट हिस्ट x. Histogram are variables. Histogram Set the random number generator. Seed लिया 1. और random numbers drawn from a Gaussian distribution. Axis का rand n 1000 और create histogram plot
pyplot.hist और यहाँ पे pyplot.so ठीक। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इधर डोजी बना दिया, डोजी कैंडल, डोजी। ओके, तो बॉक्स प्लॉट पे आ जाओ। बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आर बॉक्स प्लॉट ऑफ for sort is generally used to summarize the distribution of the data of a data sample. Whisker plot. A box and whisker plot or box plot or sort is generally used to summarize the distribution of a data sample. The axis is used to represent the data sample, where multiple box plots can be drawn side by side on the x-axis if desired. The y-axis represents the observation value. A box is drawn to summarize the middle, 50% of the data set, starting at the observation at the 25th percentile and ending at the 75th percentile. The median or the 50th percentile is drawn with a line. A value called the interquartile range, or IQR, is calculated as 1.5 aspects the difference between the 75th and the 25th percentiles. Lines called whiskers are drawn extending from both ends of the box with the length of IQR to demonstrate the expected range of sensible values in the distribution. Observation outside the whisker might be outliers and are drawn with a small circle. The box plot is a graphical technique that displays the distribution of variables. It helps us to see the location skewness spread. Acha, tile length and outlying points. The box plot is a graphical representation of 5 numbers summary. Box plots can be drawn by calling the box plot functions. Box plot data sample as array or list. Box plots are useful to summarize the distribution of data sample as an alternative to the histogram. They can help to quickly get an idea of the range of common sensible values in the box and in the whisker respectively, because we are not looking at the shape of the distribution explicitly. This method is often used when the data has an unknown or unusable distribution, such as non-Gaussian.
The example below creates three box plots in one chart, each summarizing a data sample drawn from slightly different Gaussian distribution. Each data sample is created as an array, and all three data samples arrays are added to a list that is added to the plotting function. From numpy to random import seed, from numpy to random import rand, and box whisker plot.py. Now Gaussian distribution. जाने कहाँ ये मेरा दिल गया रे, अभी तो इधर था. 5 cross random. Create box whisker plot. So line plot. अगर हम ये करें, मैं क्या किया, रैंडम और 3 अलग अलग बनेगी हमारी दोजी कैंडल है, दोजी कैंडल 1000 और ये पाइप प्लॉट और हमने किया यहाँ पे. ओके, तो the example below created 3 box plot in one chart, is summarizing a data sample drawn from a slightly different Gaussian distribution. Each data sample is created as an array, okay, and all 3 data samples are added to a list that padded to a plotting function. Running the examples create a chart showing 3 box whiskers. ये किया, फिर उसके बाद आगे है. We can see that the same scale is used on the y-axis for each making for the first plot. Look spread out. In this case we can see the black box for the middle, 50% of the data, the orange line for the median. Okay, ये line हमारी medians है. The lines for the whiskers summarizing the range of sensible data, and finally dots for the possible outliers. Okay, scatter plot is generally used to scatter plot is generally used to summarize the relationship between two paired data sample. Paired data samples means that two measures were recorded for a given observation, such as the weight and height of a person. The axis represent observations value for the first sample, and the y-axis represent the observation value for the second sample. Each point on the plot represents a single observation.
Scatter plots are bivariate or trivariate plots of variable against each other. They help us to understand relationship among the variable of the dataset. A downward sloping scatter indicates that we increase the value variable on the horizontal axis and the variable on the vertical axis decreases. 5 plot scatter. Useful for showing the association or correlation between two variables. A correlation can be qualified each, such as a line best fit. That too can be drawn a line plot on the same chart, making relationship clearer. The dataset may have more than two measures. Variables are columns or columns. For given observation, a scatter plot matrix is a chart containing scatter plots for each pair of variables. In a dataset with more than two variables, the example below creates two data samples that are related. The first is a sample of random numbers drawn from standard Gaussian. The second is dependent upon the first by adding a second random Gaussian value to the value of the first measure. For example of a scatter plot. फर्स्ट वेरिएबल लिया और सेकंड वेरिएबल है ये, क्रिएट किया स्कैटर प्लॉट। हे कृष्णा, दो सौ बीस। क्या कह रहा है? Running the example creates a scatter plot showing the positive relationship between two variables. We will more about describing relation between the variable chapter 12 में, but the first sample random numbers drawn from the standard version. The second is dependent upon the first random version. First इतना ये मिला extensions, मतलब ये खत्म। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? रैंडम नंबर्स। चलो भाई, अब रैंडम नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय 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 बाय। और बाकी एक चीज़ थी, जो लोग यहाँ पे हैं, इलाहाबाद पे हैं, उनके लिए कि एक हम लोगों ने ऐप लॉन्च किया है, और जो कि स्विगी और जोमेटो का क्या है, एक रिप्लेसमेंट है। होमली फूड नाम से आप सर्च करोगे मिल जाएगा। कहाँ पे? आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा होमली फूड्स। और अभी काम चल रहा है उस पर, और भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। बाकी ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, इन्हीं सब में हम लोग बिजी हैं थोड़ा से। बाकी मैंने और भी कई सारे इस बीच प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं।
जैसे कि यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ। साइंस टेक एंड सी एस वर्ल्ड, टी एप्स, एक ये प्रोजेक्ट है, ये मोबाइल ऐप है स्टडी प्लानर। इसको आज आज या कल में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। वेदर ऑफ नोटिफिकेशन पे भी कुछ देर में काम करूँगा। और ये वाली फाइल नहीं है शायद, वो फाइल कहाँ भाई, वेदर नोटिफिकेशन ऐप मैंने कहीं और बना दी। फ्लटर 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 मैं इधर भी सीख रहा था, ठीक है। तो फ्लटर इधर बीच मैंने कंप्लीट किया, मतलब फ्लटर वगैरह अलग से सीख रहा था क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स ग्रोथ करनी थी और भी चीज़ों में, तो इसलिए मैंने फ्लटर पे काम किया है बहुत सारा, मतलब खुद पर काम किया है जिसको बोल सकते हो आप। मैं क्यों और इतनी बंद कर दिया मैं। तो आज 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 फ्लटर एप्लीकेशन, ये है फ्लटर एप्लीकेशन, ओपन विद कोड। बस इसको मैं अभी अपने एंड्रॉयड सॉरी आईफोन में चलाने का तरीका ढूंढ रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं कैसे रन करूँ इसको, और बाकी देखते हैं। अभी तो सीख ही रहा हूँ फ्लटर, बट फिर भी एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है इसका यूज़ करके, और बाकी तो देखते हैं। ये है फ्लटर का पूरा, ये वेदर नोटिफिकेशन ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसमें कि कोई भी वेदर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचेगी विद वाइब्रेशन। मैं चेक कर रहा था वाइब्रेशन मोड अपना कि वाइब्रेट करके आएगा कि नहीं आएगा, बट उसके लिए पहले मोबाइल में मुझे ये मतलब चलाना होगा किसी भी तरीके से करके, ठीक है। तो भी यही सब पे काम करना है। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल हम लोग मिलेंगे। अब फिर से रेगुलर कंटिन्यू होने वाले हैं क्योंकि आज तक थोड़ा टाइम का गड़बड़ था, शेड्यूल सही नहीं बैठ रहा था। आज सब कुछ सही हो गया है, ठीक है। तो कल से मिलते हैं, अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।